everyone. This is Sushma Vishwakarma, and you are watching Punekar News. Welcome to our special episode of Empower Her Talk series. Today, we are going to navigate the journey of breast cancer treatment from the moment of diagnosis to path of recovery. This conversation is a part of Pink Hope initiative by Punekar News, where we are committed to spread awareness and save lives. Today we have a very special guest, Dr. Girija A. Patil with us. Dr. Patil is a consultant breast surgeon. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Our second special guest is Mrs. Neeta Deulkar. She is a cancer survivor. She has already conquered the disease and she is here with us to share her journey. Welcome to our show, Mrs. Neeta. Thank you. So let's start with Dr. Girija. Ma'am, could you please tell us breast cancer diagnosis and treatment में जो स्टेज होते हैं उनके बारे में बताइए हमें. Okay, so first we start with diagnosis. So the definitive diagnostic tool is a biopsy. जो clinical examination होता है, that is a probability that I suspect malignancy. Even a radiological diagnosis होता है जिसमें we do sonography or mammography. They also give a probable chances, percentage that you may have malignancy. But it is the biopsy that definitively tell us that this is cancer. That is evidence based. This I'm seeing the tissue from your lesion and it is malignancy. ये cancer है. तो biopsy हम अभी core biopsy करते हैं. इसको गन बायोप्सी बोलते हैं, इसको ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं, इसको कोर बायोप्सी बोलते हैं. दिस इज अ स्टिचलेस बायोप्सी. इट इज अ office procedure. You don't have to get admitted, you don't have to get any stitch or full anesthesia and all that thing. Okay, after we get the diagnosis, we go into the second stage of it, that is understanding your cancer. इसको मतलब इसको बोलते हैं staging. तो मैं एक एनालॉजी देते हैं, जैसे हमको पता चलता है कि वी आर अंडर some enemy is going to attack us. So what we do, we first find the strength of the enemy. कितने हैं, what is their nature. So that is what we do in the staging part of it. So we want to know what is the stage of the disease, and then we want to know its biology. Is it very aggressive or is it it's not very aggressive? So biology and staging, both things are done. So in staging, we either ask the patient to get a PET scan to be done, or we get a CECT scan of abdomen, chest, and on the blocks of the biopsy, we get hormone receptors done. Hormone receptors are the receptors which are there in the cells. Normal cells of the breast have these hormone receptors. So we want to know if the cancer also has these receptors on them, or they have changed. It's something different biology that they have got now. So either a patient is hormone receptor positive, or the patient is hormone receptor negative, or there are still more combinations in it, few more, that is HER2 positive, ER positive, HER2 negative. So there are multiple, 5, I think, combinations of hormone receptors. That tells us about the biology and staging. So we have this, you want me to tell the whole thing right now? The whole staging process? Yes, ma'am. Okay. Okay. So once we get the report of, see, what staging is going to tell us is that, is it localized, it's in the breast, or it has spread somewhere else. Okay. So if it has spread somewhere else, it becomes directly stage 4, that we called as metastatic breast cancer. Okay. Because it has gone beyond the breast and axilla to some other part of the body. Now, stage 1, 2, 3 are where the either the lesion is only in the breast. That would be stage 1. So from stage 2, you involve the nodes. The node starts getting positive. There are some nodes in the axilla which carry the lymphatics from the breast. So when the nodes start becoming positive, from stage 2 to 3, it is only the size of the tumor that is increasing in the breast, as well as the number of nodes in your axilla.
but still it is local. It has not spread beyond the axilla to some other part of the body. Okay, so we'll be the treatment, the curative treatment that we say that we can cure you or we try to cure you. This happens from stage 1 to stage 3. There is something called a Okay. stage 0 also. We will not talk about it because mostly in India we get patients at stage 1 onwards. One. Okay. Yeah. So stage 1 to 3 we are trying to cure the patient, and Okay. from at stage 4 we just try to give a palliative treatment, improve their disease free survival or overall survival, just try to improve their quality of life while they're dealing with that disease. We cannot eradicate it completely if you're in a metastatic stage. Okay, Okay. so one, two, three. In the first three stages, there are another, depending upon your hormone receptors, there are different types of treatment that we offer a patient. Now that we know what we have got the enemy, we know how much is the enemy. What now we want to strategize? What is the best way to tackle this enemy? Shall we go in directly and have a fight with them, or we bombard something and bring down their strength and then put our foot soldiers and go into the war? Okay, so when they're bombarding from far, it is called as giving them chemotherapy before we operate. That is called as neoadjuvant chemotherapy. So some patients will be told to take chemotherapy first. So in these patients, we are trying to do few things. One is most likely that tumor is aggressive. So we want to see how sensitive that tumor is for a particular chemotherapy agent. So this we Okay. can be tested only when the tumor is in the body. So if Okay. we know the tumor is not responding to this chemotherapy agent, we can change the chemotherapy agent to something else. So this is done in aggressive tumors, especially in triple negative breast cancer and HER2 positive breast cancer. We give chemotherapy first. We complete all chemotherapy cycles before we go in for the surgery. Surgery is the actual war. Then we operate. Then there is another where the biology is favorable. It's not very aggressive tumor, but it's a very large tumor. So, since nowadays we are not sacrificing the breast, we are conserving the breast, we want to reduce the size of the tumor and downstage the whole disease. So, in that cases also we give chemotherapy first, but we don't give the entire chemotherapy first. We give few cycles just to achieve our goal of reducing it enough to for us to operate. That is one thing. And there are other patients in which the tumor is also small, the biology is also favorable. We go ahead and operate first. After surgery and chemotherapy, in whichever sequence it might come, depending on the biology, chemotherapy first, surgery later, or surgery first and chemotherapy later, there are certain patients who require radiation therapy also. So if your nodes are positive, the armpit already has some tumor gone into armpit, we generally give radiation therapy. And all the patients who have had breast conservation surgery, whose breast is preserved, they need Hmm. to have a radiation therapy. And another treatment is hormone treatment. Hormone treatment is done given when the patient is hormone positive. So we start an anti-hormone. This is a preventive kind of medication which is given for at least minimum 5 to 10 years to the woman. So this Okay. is how the treatment takes place. Okay. As Dr. Girija said, there are 4 stages of breast cancer, and for हर एक स्टेज के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं. Our next question to Mrs. Neeta. Mrs. Neeta, as a breast cancer survivor, could you please tell us about your journey? Yeah, yeah. Before that, before answering to your question, a few of my friends are saying that they are unable to see it on the link punekar.news.in. They are unable to see it. That's what they are saying. Oh, so Maybe I don't know. Visible on YouTube and FB both, right? yeah, Mm-hmm. Anyways, I have asked it's them to try both. it's www.punekarnews.in. Yeah, yeah, yes. That's what yesterday you sent to me, and I have sent that same link to them. अच्छा. Anyways, coming back to the question, what is the question? Can you please repeat? एज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए.
See, I have been exercising and following yoga and health conscious right from it's my nature, I think so. So I have been Mhm. following that for many years, and Okay. I mean, I if required, I can have 108 Surya Namaskar as well. Oh. So yeah, and so when I felt the hardness, I never thought that it can be. Even I like junk food and all. Always Hmm. no for me. Mhm. Yeah, overnight staying awake and all. Always no for me. But so when I felt the hardness, I never thought it can be a cancer. But and at the same time, I used to do the medical checkup every year. Last 15 years, I'm regularly following that. Okay. And exactly when it was COVID that I missed it. And I अच्छा. was doing even mammography every year. And Mhm. every year it came negative. And when I missed it, same time this guest came into my body. Oh. So when I felt the hardness still, sorry, still I never doubted that it could be a cancer. I thought Mhm. because I'm exercising, because I used to do gym, aerobics, and yoga, so maybe some muscle hardness, I thought. But अच्छा. it was around September 21 when the second wave was subsiding. So I just Okay. rushed for the medical checkup. Okay, let me get through what it is. Immediately I Mhm. rushed. And then they asked for the biopsy. Even during, whenever they say biopsy, there are chances that cancer it's leading towards that, but still Okay. I was so confident internally. But okay, anyway, I had to do the procedure, so I did it, and it was a first stage cancer, which was Okay. unbelievable to me, but it was there. ओके। तो Yeah. ये बहुत बड़ी बात थी कि आपको पता, आप जब आपने लंप देखा, उसके बाद आपने उसे अवॉइड ना करके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया। Yeah, ऐसे बहुत सी फीमेल हैं जो अवॉइड करती हैं इसे, I was coming लाइक to that इफ दे सी। point. हाँ। I was coming to that point that unless it pains or unless it becomes unbearable, then only females or women go to the हाँ। doctor. Till then, कुछ नहीं हो रहा है, तो why to go to doctor? Why to spend करेक्ट। money? This is the general करेक्ट। tendency of a करेक्ट। woman. So that should be करेक्ट। avoided. या सो देयर आर फीमेल्स दे अवॉइड इट। तो डॉक्टर गिरिजा, आप क्या कहना चाहती हैं उन फीमेल्स को? मैं आई क्लासीफाई जो पेशेंट्स में देखती हूँ ना, ये 3 टाइप के पेशेंट हैं। तो एक पेशेंट ऐसी है कि दे कम होम, दे सी अ स्ट्रेंजर एंड दे विल स्टार्ट शाउटिंग एंड गेटिंग एंग्शियस कि भाई ये तो कोई मुझे मारने ही आया हुआ है, मे बी ही हैज अ बैड इंटेंशन। सो दिस इज वन वेरी सिवियर लेवल ऑफ एंग्जाइटी ऑन सीइंग अ स्ट्रेंजर। दूसरी हम्म। लेडी ऐसी है जो घर आते अगर स्ट्रेंजर दिखता है तो वो दे विल बी काम एंड क्वाइट एंड दे से कि अरे ये बिनाइन लगता है, मतलब इसको ये कोई मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है तो रहने दीजिए ना, चलने दीजिए, काइंड ऑफ। ये 2 टाइप्स ऑफ लेडीज। करेक्ट। तो दोनों टाइप की लेडीज में गलत है। मतलब फर्स्ट की बिना कुछ बिना डायग्नोसिस के आप बहुत एंग्शियस होना, बहुत स्ट्रेस में जाना। आती है, दे स्टार्ट क्राइंग व्हेन दे कम टू माय ओपीडी, मैं 2 दिन से खाना नहीं खा पाई हूँ, मेरे इसमें कुछ हो गया है। हर चीज कैंसर नहीं है ब्रेस्ट में होने वाली। नॉट एवरी हम्म। थिंग दैट कम्स इन ब्रेस्ट इज अ कैंसर। एंड देन आर करेक्ट। अदर वुमेन, दूसरा स्पेक्ट्रम जो है, जो मुझे बोलती इसका तो कोई तकलीफ नहीं था मुझे, इतने 6 महीने से है, बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा था, कुछ नहीं था, इसीलिए हम ऐसे ही बैठे। तो ये दोनों बिहेवियर बहुत डेंजरस है। The third one राइट। should be balanced, like Neeta did. You know, she felt यस। something, she got herself evaluated and diagnosed. That is how यस। a person is supposed to do be. You यस। know, खुद को diagnose मत करो, don't jump to conclusions, just go to a doctor and take it on from there. तो ये ओके। ब्रेस्ट में एक्चुअली अर्ली डायग्नोसिस हैज अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। जी। इसका Absolutely. इम्पैक्ट क्या है? नॉट जस्ट सर्वाइवल पे इम्पैक्ट है, आपके फाइनेंसेस पे भी इम्पैक्ट है। सी, Absolutely. कैंसर हैज अ ह्यूज फाइनेंशियल sector to it, हम्म। very big thing. It's not just the disease but it's the finance, both goes hand in hand. अगर आप अर्ली स्टेज में आते हो तो आपको
मतलब 1 साल में शायद आपकी ट्रीटमेंट वगैरह सब खत्म हो जाएगी, एंड देन द डॉक्टर विल से कि यू डोंट नीड टू सी मी, यू कम टू सी मी आफ्टर 6 months or 1 year. That is end of it, you know. But if Absolutely. you're coming at a late stage, you're going to be needing some kind of treatment throughout your life. That's a huge financial load, isn't it? So it's important to come early, but it's also important not to get stressed if you find something. जी, जैसा कि डॉक्टर गिरिजा ने बताया कि टाइमली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेस्ट कैंसर। सही वक्त पर इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है ताकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर गिरिजा, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के लिए कॉमन मेथड क्या है एंड हाउ डू दे वर्क? Okay, so like I said before, biopsy is the definitive treatment. ये इसको बोलते हैं evidence based, कि ये रहा ओके। तुम्हारा टिश्यू, इसमें कैंसर है तो आपको कैंसर है। लेकिन हम्म। doing mammography regularly, before mammography also, all women in their 20s, क्योंकि अभी हम 20s में भी breast cancer देख रहे हैं, so in your 20s, maybe around 25, you should start doing breast self examination. That is very ओके। important. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है? मतलब आप आपकी नॉर्मल ब्रेस्ट को जानते हो, मिरर के सामने खड़े रहते हो, आपकी ब्रेस्ट को देखते हो, उसकी साइज कैसे है, उसका कॉन्टोर कैसा है, निप्पल कौन सी डायरेक्शन में। हर वुमेन का ब्रेस्ट यूनिक होता है, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। सो अगर आपको करेक्ट। नॉर्मल पता है तो ही आप बता सकेंगे अब नॉर्मल क्या है। बहुत बार हम्म। फीमेल्स को रिट्रैक्टेड निप्पल पहले से होता है, you know, if they जी। don't know कि this is their normal, how will they know कुछ बदल चुका है इसमें। तो ये 20s में करना चाहिए। at 40 you should do one mammography screening. हम्म। ओके, 40 ईयरली मैमोग्राफी। अगर आप हाई रिस्क है, मैं आपको हाई रिस्क फैक्टर्स भी बता देती हूँ, इंडियन विमेन में क्या हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सी, इंडियन रिस्क फैक्टर्स जो हमारे हम पढ़ते हैं मोस्टली वो वेस्टर्नाइज्ड फैक्टर्स है, बिकॉज हमारे यहाँ तो टाइम पे शादी होती है, हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, फिर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। 90% women have done everything right and yet they have got breast cancer. So in Indian women, risk factor is dense breast. Indian women tend to have dense breast. मतलब उनकी ओके। ब्रेस्ट की घनता जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, दैट इज अ रिस्क फैक्टर। एंड वी डोंट ओके। लूज डेंसिटी आफ्टर द एज ऑफ 40. Our breast still ओके। remain heavy. That is one thing. हम्म। Then obesity. Obesity कौन सी? तो ये सेंट्रल ओबेसिटी जो है ना, टमी का फैट, दिस इज सेंट्रल। सो इंडियंस आर सेंट्रली ओबीस। और जब पीरियड चली जाती है, पोस्ट मिनोपॉजल ओबेसिटी जो होती है ना, हम्म। that is one factor in Indian women. Then ओके। recently I found women with lot of abortions, history of abortions. That is ओके। also not a good history to have, because you're playing with your hormones. There are a lot करेक्ट। of surgeries, so that is one thing I've seen. In lower socioeconomic, this I've seen women apply misri. So I found correlation between misri, and it's a form of tobacco. They're not smoking, but they're taking it in another form. So that ओके। is also a risk factor. So these women, maybe if you are into that risk factor of family history and all these things, maybe you should do yearly mammography from 40 only. But if you don't ओके। have a risk factor, maybe you do one at 40 and then start doing regularly after 45. Mammography is safe. When ओके। there is this misconception, they think कि बहुत रेडिएशन है इसलिए 40 से पहले मैमोग्राफी नहीं करनी होती। नो नो नो, रेडिएशन ज्यादा नहीं है मैमोग्राफी का। प्रॉब्लम है कि डेंसिटी अगर ब्रेस्ट की ज्यादा है, 40 से पहले ओके। ब्रेस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हम्म। उसमें सेंसिटिविटी ऑफ दोज रेज गोइंग पेनिट्रेटिंग इनटू द ब्रेस्ट टिश्यू इज अ प्रॉब्लम। ओके। So we may ओके। not have a proper diagnosis with mammography. इसीलिए 40 से पहले mammography नहीं करते, तो सोनोग्राफी करते हैं हम। It has nothing to do with the ओके। radiation per se. That is a misconception. Okay? ओके। अगर किसी की breast 40 plus है लेकिन उसकी breast thick है, I would still हम्म। do a mammography and sonography to get both things to help me with हम्म। the diagnosis. हम्म। Because the mammography may not be sensitive, even though if she's 40 plus and she has a very huge dense breast. So राइट। that is how it is. ओके। There is a term called triple assessment in Yeah, diagnosis of triple breast assessment. cancer. So Yes. what is that? What is it? Could you please explain?
Okay, the triple assessment is three pillars of assessing the breast. So any Hmm. patient who comes to you with any breast symptom, फर्स्ट असेसमेंट इज क्लिनिकल असेसमेंट. तो क्लिनिकल असेसमेंट में क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनको, वी टेक देयर हिस्ट्री कि आप की फैमिली हिस्ट्री है, आपकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, आपने हार्मोन्स लिए हैं, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की है कि नहीं. सो ये एक Hmm. डिटेल हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की. So we जी. sort of get a gauge of the risk factors of the patient. And then is Hmm. clinical breast examination, where a consultant is doing clinic breast examination of the patient. That is called as Right. CVE, clinical breast examination. और Hmm. उसके ऊपर एक डायग्नोसिस माइंड में आ जाता है. सो आई थिंक कम टू एन कंक्लूजन कि दिस लुक्स लाइक अ मैलिग्नेंट लीजन और दिस मे डजंट लुक लाइक अ मैलिग्नेंट लीजन. Then Hmm. depending upon my findings, age of the patient, her risk factors, I'll send the patient to radiology. तो आइदर Okay. सेकंड पिलर हो गया ये रेडियोलॉजी. रेडियोलॉजी में क्या Okay. है, अगर आप सोनोग्राफी को भेज देंगे, या तो मैमोग्राफी के लिए भेज देंगे, या तो सोनोग्राफी मैमोग्राफी के लिए भेज देंगे, या तो एमआरआई के लिए भेज देंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एमआरआई ब्रेस्ट आल्सो व्हिच हैज वेरी गुड सेंसिटिविटी. तो ये Hmm. तीन चीजों में से एक चीज को भेज देते हैं. तो जी. ये दो दो उसकी एक प्रोबेबिलिटी आती है, उनका एक रिपोर्ट आता है. फिर इसमें 80% चांस ऑफ मैलिग्नेंसी और 50% चांस, और there is no chance of malignancy, this looks like a benign thing, or this looks like indeterminate, I don't could be this, could be that kind of. तो एक बायरेट स्कोरिंग होता है रेडियोलॉजी का, वो आता है 1 to 6 Hmm. बायरेट स्कोर होता है, Hmm. जिसमें कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है. 3 के ऑनवर्ड्स प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनकी बायोप्सी करनी है कि नहीं करनी है. तो बायरेट 3 onwards we generally do a biopsy of the patient. The biopsy is done to rule out malignancy. Our intention is to rule out malignancy, not to give you malignancy or not to find इसकी. तो इसमें भी ऐसे होता है कि बहुत सारी चीजें कि बायोप्सी के बाद नॉन मैलिग्नेंट होती है. देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स व्हिच आर नॉट मैलिग्नेंट, वी कम टू नो आफ्टर बायोप्सी, and some Okay. tumors are malignant. So that is the third and the final pillar. तो ये तीनों पिलर Okay. करने जरूरी है. Then we come conclusively say कि this is what. Okay. मिसेस नीता, आपने बताया कि आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस रही हैं, मैमोग्राफी भी कराती थी आप समय समय पर, बट कोविड की वजह से आपने एक बार मिस कर दिया एंड यू डायग्नोज्ड विथ ब्रेस्ट कैंसर. Yeah. तो उस टाइम पे आपके जो इनिशियल थॉट थे या इमोशन थे वो क्या थे? First of all, I was very surprised कि कैसे हो सकता हम्म. है. Then I was also stunned for some time. हम्म. But then I thought, now it has come on paper, that means I have to accept it. And acceptance is the first step, I feel, because ये क्यों हो गया, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, देन ऐसे क्यों हो गया, ब्रूडिंग अराउंड देयर इज नो पॉइंट. नाउ अभी आया है, इफ इट इज देयर ऑन द पेपर, फाइट इट. दैट वाज माय फाइटिंग स्पिरिट, आई कैन से. क्या, since it is now in the body, I have to see that as soon as possible how it goes out. That was, but एक दिन थोड़ा मेरे को, I mean, I was stunned and disturbed and all that. But uske baad I accepted the fact and then started looking for the further actions, how fast I can take those so that it doesn't lead to any worse thing. जी. एक्सेप्टेंस जो है कि बहुत जरूरी है यहाँ पर. डॉक्टर गिरिजा, could you please describe the role of surgery in breast cancer and what are the surgical options available? Okay. So now our whole aim is to preserve the breast. Not there is a lot of body image issues in women. They want to preserve the breast. In India, you can say there are two types of women. Some women, in spite of having early breast cancer, they don't want to preserve their breast because Okay. they feel ki they cannot handle the stress of having it. And there are other women, they want to preserve. So we allow the patient to make the choice for herself. We explain that the outcome is similar. We can preserve the breast. So what we do is we remove only the tumor and little bit surrounding part of normal tissue. We send Hmm. this sample for frozen section pathology inside the OT, and the pathologist tells us these margins are clear. That is no tumor on the specimen that we have sent the margin.
and then Correct. if required we close it normally. If the breast is big and the defect that we have created by removing that uh, tumor and the normal tissue can be closed normally with the surrounding breast tissue, then we call something called as volume displacement. We displace the volume of surrounding breast into that area and we close it. This is an oncoplastic technique. But if the tumor removed is bigger, it's a bigger defect that is left into the breast and the breast may not look normal. So it is important to understand that we should not be uh, just doing breast conservation doesn't mean that we leave behind a disfigured breast. You know, Correct. it's not a right thing for a woman to see a part of her body disfigured. You know, we kept a little bit of breast for namesake and it is looking all bad because she's going to look at it every single day and it is not a nice thing to see a disfigured body. So Mhm. oncoplasty is something where we do the therapeutic, we do the oncological work of removing the tumor, but we make the breast look as normal as possible, as good as possible. If you're leaving behind the breast, it should look good, it should not look ugly and disfigured. Correct. So sometimes Correct. we bring the tissue from the side of the armpit or the back side or the abdominal tissue, depending upon the defect that is left behind, and fill it so that we give a good contour to the breast. So these are the new things in the surgical aspects, that either it's only closure, direct closure, removing, moving the tissue from the breast to it area, or moving the tissue from some part of your body into the breast to give a good contour effect. And the third is mastectomy. So sometimes, like, there are some cancers which are multicentric, which are at multiple places. So we some, or Okay. we may not get a positive negative margin. We keep removing and we are not getting a positive margin. This also can happen because there is something called as ductal carcinoma in situ which is there, and you cannot 100% say before surgery the extensiveness of this thing. So we can remove and we end up removing almost two-thirds of the tissue. No point in saving the breast. Then there are options of reconstructing the whole breast again. So it is not like, you do mastectomy and that's it, you are flat chest. But you Mhm. can reconstruct. We reconstruct the whole breast also in women in whom we cannot preserve the breast, or do any oncoplastic procedure with keeping a part of her breast, and we have to remove the whole breast but she wants a breast. So we reconstruct it fully from other part using the tissue from other part of her body. Okay. So So, Mrs. Nita, as a breast cancer survivor, tell us your journey about surgery. Yeah, when it was diagnosed as first stage cancer, then it was operated in Dinanath Mangeshkar Hospital by Dr. Dhananjay Kelkar. And at the same time, I had consulted even Ayurvedic Vaidya, which is our family friend, and he has cured younger brother's cancer. It Hmm. was in 94, 95. It was non-Hodgkin's lymphoma. So Okay. I had that confidence in mind that as an alternative therapy, I also have that. So I was not totally shaken up. But then, and he was also giving me confidence that with Ayurveda, it can get dissolved. But again, we discussed, and he said that, see, it takes little time to get dissolved. So, till the time you will be having in mind that it is there in my body still. So, if you want to get operated, you get it operated. And then we will continue the medicines to um, reduce the side effects of maybe chemo or radiations, or Hmm. maybe reoccurrence sometimes. So that was there as a option as well. And then I went to Dinanath Mangeshkar and fixed up the date. And it was actually, as Dr. Girija said, that since it was in first stage, so I was relieved just next day. It Okay. was not a longer period at all, and I was relieved next day. And then there were, but it was quite than what I have seen during my brother's case or other patients. When I say this was like a kind of touch and go, I can say, because I rushed immediately and did the Correct. procedures. Yeah. Okay. Uh,
ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का क्या महत्व है और इसके ऑप्शनल साइड इफेक्ट्स के बारे में बताइए। ओके, सी, जिस जो चीज नेसेसरी होती है ना, उसके कोलेटरल डैमेज के बारे में सोचना नहीं होता है. Any war has a करेक्ट। collateral damage, but that war is essential for our own survival. Okay, so हम्म we don't think about side effects of give more importance to side effects. We give more importance to the positive effects of what the therapy is going to do. If chemotherapy has been advised to you, you should definitely take it. Only a doctor can tell you कि you don't need a chemotherapy. There are certain early breast cancers where you don't need chemotherapy, but if a हम्म doctor says you need a chemotherapy, you must take it. तो उसके साइड इफेक्ट्स में यू लूज हेयर लॉस होता है कीमोथेरेपी से, बिकॉज कीमोथेरेपी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती है, बिकॉज कैंसर इज अ फास्ट डिवाइडिंग सेल. करेक्ट। कीमोथेरेपी क्या करता है, वो आपके इससे दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम से दिया जाता है. तो ब्लड स्ट्रीम से हम्म हर बॉडी में चला जाएगा, हर पार्ट में चला जाएगा, फ्रॉम हेड टू टो इट गोज राइट। एवरीवेयर, and it kills all the cells, cells which might not have formed metastasis as of now, but they are in the ओके। process. अगर आप स्टेज, मतलब आर्मपिट में अगर गया हुआ है मैलिग्नेंसी, तो ब्लड स्ट्रीम उसी से भी उधर हर जगह घूम रहा है. कैंसर इज हम्म सपोज टू बी सिस्टमिक डिसीज टू स्टार्ट विथ ओनली. तो कीमोथेरेपी क्या करता है, ये सारे सेल्स जो इधर उधर गए हुए हैं, जो अभी तक उन्होंने घर नहीं बनाया, तो उन सबको मारता है. और उसमें कोलैटरल डैमेज ये है कि बाल जाना, दैट इज द बिगेस्ट वन. बाकी थोड़े से हम्म 4 दिन तक थकान आती है, थोड़ा नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग. बट दीज आर अभी के जो कीमोथेरेपिक एजेंट एंड केयर जो है, तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. लाइक इट डजंट बिकम बैड. जो ओल्डर टाइम में जो होता था कीमोथेरेपी एंड नाउ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इट. अभी ऐसे कुछ ग्रॉसली कुछ डरने वाली बात होती नहीं है. आप किसी भी हम्म चीज के लिए, आप गैस्ट्रोएंटराइटिस और इसके लिए एडमिट होते हो, एंटीबायोटिक लेते हो 4 दिन, तो जिस तरह से थकान फील करते हो, उसी टाइप की थोड़ी बहुत थकान 4 दिन फील करते हो आप. उसके बाद यू बकअप, यू जस्ट कम आउट ऑफ इट, एंड देन यू गो फॉर द नेक्स्ट सेशन. इट इज यूजुअली 21 डे साइकिल. 21 डेज को आप नेक्स्ट ये पुश लेने के लिए तैयार रहते हो. फिर थोड़े 4 दिन थोड़ा थकान आता है, फिर आप उठते हो, एंड एक बार ये खत्म हो जाती है थेरेपी, तो आपके बाल भी वापस आ जाते हैं, नॉर्मल की तरह वापस आते हैं. समटाइम्स इनफैक्ट यू गेट ब्लैक हेयर इंस्टेड ऑफ वाइट हेयर. आई हैव सीन दैट आल्सो हैपनिंग. अ हम्म प्रिटियर एंड मोर बेटर क्वालिटी हेयर कम्स बैक. तो इतना बुरा है नहीं. And another thing I wanted to say is, she said, no, it's now only 1 day admission for all cases. ओके। अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है आपका, मतलब दूसरी हम्म जगह से टिश्यू निकाल के आपको ब्रेस्ट में डाला नहीं है, तो आप सुबह ओके। सर्जरी के एडमिट होते हो और दूसरे दिन घर भेज दिए जाते हो. Yes. सो दैट इज द नॉर्म एवरीवेयर वी फॉलो नाउ. कितना भी बड़ा सर्जरी हुआ हो फिर आपका, अनलेस टिश्यू कहीं और से निकाला है, एंड वी नीड टू कीप अ वॉच कि हाउ द टेक इज सूट हुआ है. तो ये थोड़ा सा है. और एक बात, शी नीता सेड अबाउट आयुर्वेदा, I would like to हम्म take it with pinch of salt. I would हम्म not advise patients to go for Ayurveda, because I have found plenty of patients who have come back to me who have taken Ayurveda, who were in early stage of malignancy. ये मैंने टाटा में भी देखा है. Early stage of ओके। malignancy, operated. These patients have been advised chemotherapy. इन्होंने chemotherapy ली ही नहीं. They have gone and taken Ayurveda, ओके। and then they have come back with recurrence. And when this happens, see, recurrence really brings down your survival. आपको failure बोलते हैं ना उसको, फिर that is, it हम्म just brings you down, it cuts the thing, and it hurts the operating surgeon a lot. Because we give our heart to every patient, थोड़ा थोड़ा दिल और सोल हर पेशेंट में दिया जाता है. जी। तो it's like you feel so bad that, oh Ray, you are early breast and you're not supposed to have a recurrence. We are trying to cure you, और आप recurrence लेके आए हो. So that is very heartening. So it's a bit a pinch of salt, unless there are some. और हर कैंसर अलग होता है. मतलब यू कांट अप्लाई कि अभी हॉटकिंस में वर्क किया तो ब्रेस्ट में भी वर्क करेगा या उसमें वर्क करेगा. दैट इज अ very this, unless we have a research, proper research, where Ayurveda does a research and say, I have treated
1000 पेशेंट्स विद स्टेज 1 ब्रेस्ट, जैसे मेडिकल में रिसर्च होता है, मेडिसिन में हर मेडिसिन हम्म, रिसर्च के बाद आती है, एंड देयर इज अ right. नंबर ऑफ पेशेंट्स द रिसर्च इज डन. Tata does the lot world research, world famous research, because they have sheer numbers. So वो रिसर्च के बाद ट्रीटमेंट में ट्रांसलेट होता है कि ओके हमने रिसर्च किया, हमने ये प्रूव किया, तो ये ट्रीटमेंट हो गया. जैसे पहले हम मैस्टेक्टमी करते थे, ब्रेस्ट को पूरा निकालते थे, सभी पेशेंट्स को, अर्ली हो लेट हो कुछ भी हो निकालना है. तो रिसर्च हैज फाउंड आउट multiple research in multiple countries on n number of patients, 1000+ patients, कि आप पूरी मैस्टेक्टमी निकालो या थोड़ा सा निकालो, तो उसमें सर्वाइवल में चेंज नहीं होता. इसीलिए तो वो हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ऑफर कर रहे हैं. करेक्ट, दिस इज रिसर्च Correct. बेस्ड थिंग. It is not just like that. So if Ayurveda Okay. also does some research and is able to bring out things, it will definitely be beneficial for everyone, in fact. But generally, chronic disease के लिए ठीक है. Something which is chronic, something which needs real acute treatment, we would really take it with pinch of salt with Ayurveda and homeopathy as well. Oh. मिसेस नीता, कीमोथेरेपी की बात सुनते ही लोग थोड़े डर जाते हैं, तो आपका क्या अनुभव था, इसके बारे में हमें बताइए. Actually, I was not advised to take chemo. It was just on the Okay. radiation of 3 weeks. So I had not that fear, because we see the effects of, just Dr. Girija said. So that thing हम्म, was not recommended for me. So it was just the radiation. So maybe for an hour or so, I had to go take the radiations and come back home. It was that अच्छा. easy, I can say, because it was diagnosed in the initial stages. अच्छा. सो डॉक्टर गिरिजा, मतलब कीमो की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है, ऐसे भी होता है ब्रेस्ट कैंसर में? अगर बहुत अर्ली स्टेज हो, फेवरेबल बायोलॉजी हो, ओके. हार्मोन रिसेप्टर ओके. पॉजिटिव होंगी ये, तो हम्म. हाँ, तो आपको शायद कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी. आर्मपिट में तक गया नहीं है वो, तो जरूरत नहीं है. ओके. इट वाज देयर ओनली. इफ इट गोज टू आर्मपिट, इट हैज ऑलरेडी मूव्ड वन स्टॉप. तो यू ओके. जनरली कीमो देते हैं अगर आर्मपिट में गया है. आर्मपिट में भी नहीं है, साइज छोटा है, हम्म. हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो हम लोग हम्म. अवॉइड कर सकते हैं कीमोथेरेपी, कर सकते हैं अवॉइड. But ओके. see, I'll tell you, my mother had malignancy. So she was in late stage malignancy. She was stage 4 to diagnose. So she ओ. survived 5 years. She had to take chemotherapy हम्म. for 5 whole years. Still, she was alive. She took chemotherapy, but she was not bedridden. She had a very active life, and she went for weddings, programs, everything. Only last 10 days of life she was bedridden. So I personally, because telling somebody else is different as a doctor, and seeing it हम्म. yourself is a completely different. So राइट. I've experienced chemotherapy in different forms. Sometimes she needed IV chemotherapy, sometimes oral, sometimes IV, but she didn't show any kind of, I didn't feel much side effects. That is what made me feel ki, okay, this is not as bad as we make out to be. To some extent it depends upon person to person also. हम्म. Some people have a emotional aspect to it. They just go down emotionally, and then they attribute it करेक्ट. to the therapy also. But she was very strong and positive lady, so she used to be just up and about, and yes for anything. Like, you say, go take mama, you need chemotherapy, yes, she'll go and take it and come back. It was She was strong. So emotional aspect also has a big thing on the Yes. therapy. Therapy per se is medicine, and it cannot have so much hold on you as much as your mind has a hold on you. देखो, अगर माइंड डिप्रेस्ड है तो अच्छा खासा इंसान, हेल्दी बॉडी भी हिलेगी नहीं, बाहर नहीं जाएगी, मूवीज नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी. Yes. And if mind is very good, a weak body will also do a lot of things. करेक्ट. करेक्ट. So we should not underestimate the power of mind. तो हम जब देखते हैं Absolutely. ये कीमोथेरेपी से गिर गया, कि कीमोथेरेपी से वीक हो गई, नहीं, ये कीमोथेरेपी से वीक नहीं हुई है, वो माइंड से वीक हुई है. Hmm. राइट. I think the राइट. mind plays the equal role of medicines. Means 50-50 ये hai. If mind करेक्ट is करेक्ट. strong, medicines work very fast.
Yeah, That's it. देयर इज अ सेइंग इन हिंदी ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. तो अगर Yes, आप correct, मन से स्ट्रांग हो तो आप फिजिकली कोई भी बैटल लड़ सकते हो. correct. correct, correct. जी. I have हाँ, जैसा one कि patient who is जी जी. metastatic breast cancer. हम्म, So she has been 6 years, and she's survivor for 6 years with a metastatic stage 4 disease to begin with. Very ओके. active lady. She also has chemotherapy going on in some form or other. हम्म. Okay, for 6 years now. But her spirit is not down, and she inspires me. There are very few patients who inspire the doctor. Otherwise, generally, patients ऐसे खास करके ज़्यादा स्टेज वाले जो होते हैं, they are really down. But she हम्म. is like inspiration, She comes she enjoys her life to the fullest. So mind is very important. आप एक डॉक्टर के साथ साथ आपने अपने ही घर में एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की जर्नी देखी है, अपनी मदर की. तो उस समय में आपने किस तरह से उनको इमोशनली सपोर्ट दिया. She was not breast, she was rectal cancer. My both ओके. parents had malignancy basically. ओ. But I think more than her, she gave me more support, I feel. Because, being a doctor, I know all the statistics of everything. राइट. राइट. Hmm? And life is beyond statistic. That is what I have learned. In, Life is not statistics. आपका स्टेज कौन सा भी हो, statistics will say something, but you have power to overcome it. In fact, she taught me how a cancer patient should be, what an ideal cancer patient is. वही खुद पॉजिटिव थी, इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे थोड़ा डर लगता था, बिकॉज मैंने इतनी सारी चीजें देखी है. तो मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, माय स्टैटिस्टिक्स आर सेइंग स्टेज 4, मतलब इतना इतना ऐसे. बट उनको देखे तो वो बोलते थे, यू डोंट वरी, आई एम गोइंग टू बी हियर फॉर 10 years, सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. तो वो काफी खुद ब्रेव थी, मतलब शी वाज अ वेरी, दैट इज हाउ शी वाज मेड. शी वाज अ वर्किंग वुमन, शी वाज अ लॉयर, वो जज थी. तो वो वैसे ही स्ट्रांग थी, तो हर चीज को पॉजिटिवली लेती थी. एंड विथ हर आई रियलाइज माइंड, जिसका माइंड स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकता है. मतलब सी, अगर अब मैं सर्जन हूँ, कभी कभी मेरा हेडेक होता है, देर इज अ सर्जरी एंड आई एम हैविंग अ हेडेक. आई कांट से कि अब मेरा हेडेक हो रहा है, सर्जरी कैंसिल कर दो, या आई एम फीलिंग लिटिल बैक पेन, लिटिल हियर लिटिल देयर, कैंसिल कर दो. ऐसे नहीं होता ना. तो आई हैव टू, इट्स माइंड ओवर माई बॉडी. सो आई हैव टू टेल माई माइंड, चलो आपको सर्जरी करना है, डजेंट मैटर आपको क्या फील हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है. So I don't have the what you say, the luxury of falling sick. So if I don't have the luxury of falling sick, I'm not going to fall sick, and I'm going to go through it. It's like that. तो आपका रिकवरी उसके हिसाब से होगा, जैसे. तो राइट. या, यू नीड टू सी दिस मोर देन, पेशेंट को तो सपोर्ट चाहिए ही, पेशेंट के रिलेटिव्स को भी सपोर्ट चाहिए. केयर गिवर्स तो बहुत ही डैमेज होते हैं, ज़्यादा डैमेज होते हैं पेशेंट से ज़्यादा. दिस इज़ व्हाट आई फील. मैंने देखा है कि अभी कीमोथेरेपी के कैसे होता है, सुबह एडमिट होते हो आप कीमोथेरेपी के लिए, शाम के लिए भेज देते हैं. तो पेशेंट तो समथिंग कुछ चल रहा होता है उसके साइड, इट्स अ इवेंट हैपनिंग टू द पेशेंट. सो व्हेन द इवेंट इज हैपनिंग टू यू, यू आर इनटू द इवेंट. बट जो बाय करेक्ट. स्टैंडर्ड होता है ना, उस स्टैंडिंग पर्सन, उसको तो मालूम नहीं व्हाट इज उसकी तो हालत बहुत बुरी होती है. वो बेचारा, आई हैव sat in that waiting room outside when my mom was taking chemotherapy, and I have seen a very gloomy picture. मतलब सब लोगों के चेहरे ऐसे डल, लाइफ जैसे उनके आंखों से चली गई हो, ऐसे बैठे रहते हैं सब लोग, सूनापन होता है उस वेटिंग रूम में. और राइट. एवरीबडी इज सैड. और वो 6 घंटे आपको क्या करना है मालूम नहीं पड़ता. 6 7 8 घंटा यू आर जस्ट वेटिंग. यू इट्स that energy is so heavy and so sad energy, no, everybody is sad, and you are also sad. And it's a very empty energy, it's a very sad energy, you can say. It's sadder than the patients who are taking chemotherapy inside. जो
उनके लिए तो नर्स होती है जो प्यार से बात कर रही है उनसे, डॉक्टर आके हाय हेलो कर रहा है, रीअश्योर कर रहा है। जो बाहर बैठे हुए हैं ना, उनके लिए कोई नहीं रहता। एंड इट्स रियली सैड थिंग। तो सपोर्ट पेशेंट को भी चाहिए, सपोर्ट केयर गिवर को भी चाहिए, बिकॉज केयर गिवर हैज हिज ओन लाइफ, वी Right. फॉरगेट दैट। एंड सम हायर स्टेज जैसे पेशेंट होते हैं, मे नॉट सर्वाइव, बट उसके बाद केयर गिवर का क्या हो जाता है, इसके बारे में कोई सोच, जो नीचे रह जाता है उसका क्या हो जाता है? वी नेवर थिंक जी. ऑफ दैट, जो पीछे रह गया व्हाट हैज ही गॉन थ्रू। देयर आर पेशेंट्स, one of my patients husband had an heart issue while she was हम्म. admitted in the for chemotherapy। मतलब वो कितने स्ट्रेस से जा रहे थे। हम पेशेंट को कंसंट्रेट करते हैं, ये कोलैटरल वाले तो बेचारे बहुत ये होता है। सो वी psychological support for the entire this family is very 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 important if the family has to thrive through this disease। not everybody is lucky like Neeta। Neeta is very fortunate। Yes, definitely. और एक बात बताती हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना योगा कर रहे थे ये, तो ये भी बहुत बार पेशेंट मुझे बोलते हैं हम तो योगा कर रहे थे, हम वेजिटेरियन हैं, हाँ फिर भी हमको ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया। सी यू लुक एट द पॉजिटिव साइड, आप योगा कर रहे हो, आप वेट मेंटेन कर रहे हो, गुड लाइफस्टाइल जी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ के डिफिकल्टीज आपको नहीं आने वाली है, बट यू आर गोइंग टू बी वेल इक्विप्ड टू फेस इट। Correct. Correct. राइट, उनका वेट अच्छा है, ओवरऑल फिटनेस अच्छा है, इसीलिए सर्जरी की रिस्क भी कम हो जाती है उनकी, ओवरऑल जी. रिस्क जो होती है एनेस्थीसिया केस की। फिर अगर कीमो लगता है आपको, तो उसमें भी आप अच्छी तरह से थ्राइव करते हो, बिकॉज आपको जी. डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है। सो तकलीफ तो आई, डिफिकल्टी आई, बट यू बिकॉज यू आर फिट, you are facing it in a much better way than what Yes. somebody who is not fit। You should look at Correct. it that way। Yeah, yeah. जी. And stress plays a very major role in cancer, I feel. Though we are maybe vegetarian or doing exercises and all that, but managing the stress is a key, I can say. And this is one of the reasons. There are various lists for the reasons of cancer, but one of the biggest reason for cancer is stress, I can say. And Yes, in yes। my case, probably that was the reason, that handling Yeah। हम्म. stress is very crucial. कैंसर को बोलते हैं मल्टी So we फैक्टोरियल are है। yes, we are तो talking about stress. तो या आपने कैसे कोप अप किया मिसेस नीता इससे? आपने कैसे मैनेज किया अपने स्ट्रेस को? Yeah. See, yoga and all definitely helps. In addition, I also follow Art of Living. So I do meditation and chanting. So that helped me to keep the positivity and basically mind calm and stable. So that helped up further for it. हम्म. It gives a better response to the medicines and all. So करेक्ट। जी. that really helped me definitely. I think या that इवन was your आई डिड question. योगा। Uh-huh. I also Okay. started doing yoga because of my mother to handle the stress। Yeah, yeah, yeah. But see, So again, everybody's mind is different. So correct. yoga's effect on me and yoga's effect on you could be different. Different. Yeah. So how you implement yoga is not only physical exercises. It is यस basically related to your mind and body coordination. यस। So managing mind and how effectively you manage that हम्म. overcomes the stress. Right. See, ये जो जर्नी यस डॉक्टर. सी देर आर मेनी वेज, लाइक एक तो योगा कर सकते हैं, आप जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए। आई ऑलवेज टेल विमेन राइट डायरी, स्टार्ट राइटिंग डायरी। करेक्ट. जो भी आपको, बिकॉज नॉट एवरी फीमेल वुमन इज एक्सप्रेसिव, नॉट एवरी वुमन हैज गॉट दैट काइंड ऑफ फैमिली एनवायरमेंट वेयर शी कैन एक्सप्रेस हम्म. व्हाट हैज हैपेंड टू हर। तो इंडियन हम्म. वुमेन काफी हद तक मुझे बॉटल्ड मिलती है, उनमें बहुत सारे इमोशंस ठसे हुए रहते हैं। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मेरे शादी के बाद ऐसे हुआ, मेरे बच्चा हुआ तो करेक्ट. ऐसे हुआ। देर आर लॉट ऑफ इमोशंस इन करेक्ट. देम which has got no outlet, they don't know where to share। So maybe they start writing diary where they remove everything they have against somebody,
तो वो जो मन का पॉइजन है ना, वो सारा बाहर निकल जाना बहुत इसेंशियल है. जैसे वो कहते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब. I just telling somebody, nuclear atomic bomb, atoms cannot be seen, but the impact of a nuclear bomb is, look how destructive it is. So the mind is that atomic energy, that nuclear bomb जो हमारे सिर में है, उसका impact is very strong. Either it can work for you or it can work against you. So you make it work for you. Write diaries. अपने स्ट्रेसर्स आइडेंटिफाई करो. डे टू डे लाइफ में आपको किस चीज का स्ट्रेस है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम स्ट्रेसर. सो यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर. यू मे नॉट बी एबल टू रिमूव अ स्ट्रेसर, बट यू कैन Hmm. ट्रांसफॉर्म इट. आप किस ये इंसान, माय माय मदर इन लॉ, से माय मदर इन लॉ मुझे तो क्या देती है, टॉन्ट करती है, तो उसको तो निकाल नहीं सकते आप, बट ट्रांसफॉर्म इट इन योर माइंड. स्टार्ट डीवैल्यू उसको, थोड़ा सा उस एनर्जी को आप जो ट्रांसफॉर्म करो, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, उसको ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग एल्स एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इट एंड रिड्यूस दैट stress in your life. I Ma'am, Diagnostic. there understand. is a question coming from our viewer. Hello, Yeah. ma'am. I have a question on behalf of my wife. She had two Ectopic ectopic pregnancy. pregnancies and two One miscarriages abortion. and one abortion. Does it affect or cause breast cancer in future? Please help. Okay. So it increases her risk very less in some percent, though we cannot say direct correlation one to one. Ki this has happened, so this will happen, because it has lot of other factors. I would suggest she should continue to do breast self examination, avoid abortions, avoid these unplanned pregnancies in future, and do screening tests after 40 plus. Start doing yearly mammography. होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is could you please tell us the role of radiation therapy in breast cancer और इसके क्या इफेक्ट्स हैं? ओके, सो रेडिएशन थेरेपी इज फॉर लोकल कंट्रोल. जैसे कीमोथेरेपी ओके. बॉडी में हर जगह जाके इधर उधर गए हुए सेल्स को मारती है, वैसे रेडिएशन थेरेपी जो लोकली ब्रेस्ट है वो उधर ही दिया जाता है, ब्रेस्ट पे दिया जाता है, तो उधर के ही सेल्स को मारती है, तो उधर की जगह को स्टराइल बनाने का काम करती है. कि थोड़े बहुत माइक्रोस्कोपिक सेल्स हो तो वो जनरली वो ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी जिनमें की जाती है, जिनमें ब्रेस्ट पीछे रहता आता है, उनमें दी जाती है. या तो मैस्टेक्टमी के पेशेंट्स हैं जिनमें नोड्स में चला गया है ट्यूमर, तो उनको भी हम रेडिएशन देते हैं. तो रेडिएशन कैसे देते हैं, 5 days अ वीक होता है, 5 दिन होता है, 2 दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, 5 दिन लेना होता है, 2 दिन छुट्टी. ऐसे फॉर अ मंथ दिया जाता है जनरली. नाउ देर आर सम 15 days हाइपोफ्रैक्शनेटेड भी देते हैं. तो और उससे थोड़ा सा क्या होता है, लोकल बर्निंग जैसा फील होता है, उधर थोड़ा सा रेडनेस आ जाता है, लोकल जगह पे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है पेशेंट्स में. एंड सम पेशेंट्स हैव एक्सपीरियंस लिटिल इडिमा, जैसे स्वेलिंग. तो सम पेशेंट्स हैव टोल्ड मी ये तो मुझे क्या दूसरी, मतलब माय ब्रेस्ट इज ग्रोइंग बिग. लेकिन जो भी चेंजेस होते हैं वो लोकल रहते हैं, वो विद इन 6 months to 1 year चले जाते हैं. मतलब आप नॉर्मल जैसा वो कलर बिलर वो जो भी आया हुआ है, जो सूजन आई है, वट एवर हैज हैपन, जनरली स्लोली 6 महीने में वो चला जाता है टिश्यू के ऊपर से. Mrs. Neeta, tell us your journey of radiation therapy. Yeah, yeah. Before that, ma'am was telling about writing the journal or Yes, diary. yes. Yeah, हाँ, regarding that, I would like to say that Indian women generally don't give time to herself. correct. She just does everything for her husband and kids and home, but she's the driver of the home, so she should be taken care. जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो when they talk about the oxygen, कि they say कि हम्म, you don't go and help the other person, you take help of that oxygen mask first, so that you are safe and then you can help others. So it's correct. the same thing. When you are a main person in the house, so you should be taking care of yourself first. But exactly वही नहीं होता है.
in Correct. Indian families. That is what I feel. जी, Yeah. तो बहुत Then, जरूरी है yes, at least maybe minimum फीमेल half के लिए an अपनी 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 हेल्थ की केयर करना, अपने आप को yes, वक्त देना, ये बहुत जरूरी है. exactly, exactly. So coming back to my radiation, जैसे अक्टूबर में आई गॉट ऑपरेटेड, उसके बाद दिवाली थी, सो डॉक्टर आस्क्ड मी कि let that Diwali and all that go through, and then we'll start with radiations. So we used to then every day. I had in the meantime I had also joined my duties. So हम्म, my office has given me a lot of concessions for that. They have allowed me for the work from home and all that. So in the meantime I used to go जैसे दोपहर में 1 घंटे के लिए हम लोग जाके आते थे. My son used to take me. So after coming back, I used to feel little weak and thoda sa giddiness and all that. But that used to be for maybe half an hour to 1 hour. Then I used to be back working on the office work. So it was ओके. not that panicky situation. And that is why people don't, when they look at me and when they look, those who have seen me previously, they don't believe that I am a cancer patient because there are no as such effects on my body to say so when they see me outside. Yeah. So it was, तो आपने कुछ yeah, go ahead. प्रॉपर डाइट फॉलो किया था रेडिएशन के दौरान, इस थेरेपी के Yeah. दौरान आपने कोई प्रॉपर. Anyways, I don't have non-veg, but I used to otherwise also take healthy food and all, organic हम्म. food and all. So I maintained the same, nothing special and separate as such. Soups ओके. soups and all थोड़ा quantity बढ़ा दिया मैंने. Liquids more. Yeah, yeah. लिक्विड्स. ओके. Yes, yes. ठीक. डॉक्टर गिरिजा, एक कैंसर पेशेंट जो है वो किस तरह से फिजिकली और मेंटली कोप अप करे इस सिचुएशन से, आप कुछ इसके बारे में गाइड कीजिए हमारे दर्शकों को. The first is acceptance. Emotional coping is first. Then second is physical coping. Some women ओके. what is कि ये कैंसर होगा इसीलिए वो आते ही नहीं आगे. हाँ, ये हम्म. जैसे they come to know they have a breast lump, लेकिन they will not come ahead because they think ये कैंसर निकलेगा. तो ऐसे सोचने से you should understand कि वो रुकने वाला नहीं है. वो कैंसर है, कैंसर की फितरत ही है बढ़ना. तो आप नहीं आओगे, उसको देखोगे नहीं, मतलब वो चुपचाप बैठ जाएगा उसी स्टेज पे, ऐसी चीज नहीं है. तो पहली चीज है कि अगर आपके ब्रेस्ट में लंप है, एक्सेप्ट करो कि कुछ चीज नया मेहमान आपके इसमें आया हुआ है और उसको दिखाना जरूरी है. दूसरी बात है, अगर जब डायग्नोसिस होता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसको पहली चीज है कि एक्सेप्ट करो. ठीक है, रास्ता क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हो सकता है. You can get जी. paralyzed, you can get, there are so many things that can happen in life. Cancer is just one of it. It is, उसका बहुत ये किया गया है, कैंसर 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 में something which is very grave bad thing. I feel, taking insulin every day is also equally bad. You're pricking your body every single day. Your hypertensive is also a thing. If you're obese and you cannot do certain things, वो भी एक obesity भी एक टाइप का डिसीज है. तो ये भी इसको इस तरह से नॉर्मलाइज करो कि ये भी एक टाइप का डिसीज है, जो बाकी डिसीजेस होते हैं उस टाइप का. बस इसको थोड़ा सा हमको थोड़ी ज्यादा जंग लड़नी है, दैट्स इट. तो ये एक्सेप्ट करो कि फर्स्ट थिंग कि यस, ये कुछ चीज मेरी जिंदगी में आई है, उसको मैं फेस करूंगी. जो आया है उसको हम कुछ नहीं कर सकते. व्हाट हैज जी. कम टू बी, वी कैन नॉट चेंज इट नाउ. करेक्ट. So first यू is हैव टू फेस accept इट. it, face it. Yeah, फेस, कोई भी सिचुएशन है उस फेस करने से ही उस सिचुएशन से आगे निकलोगे आप. जी. फेस नहीं जी. करोगे तो उसके सेकंड स्टेप पे जाओगे कैसे आप. तो जी. उसको, करेक्ट. हाँ, then connect with your doctor, understand all aspects of your treatment. you know when your doctor is going to be with you for 5 years journey, this is almost a 5 year journey, unless you are in a very early stage 0 or something, but just generally 5 years you're going to follow up with the patient, Yes. doctor. So understand all your doubt, understand about disease, write on a note. When आप डॉक्टर के पास मिलने जाते हो ना, तो डायरी में आपके डाउट लिख के जाना, ताकि आप भूले मत. तो बीच में कुछ मन में नहीं रहना चाहिए, ये पूछा नहीं तो वो कीजिए. फिर
जी आप अपने आप किस टाइप के इंसान हो सोचिए। सब लोग कुछ कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, ऐसे नहीं। अभी सर्जरी में हम जी बोलते हैं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी है, आप करो। कुछ फीमेल्स है जिनको हमने ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी की है, उसमें के कुछ है जिनको बहुत एंजाइटी होती है, दे कम बैक अगेन एंड अगेन, वापस आ गए, हम्म वापस आ गए, हम्म आई थिंक आई नीड टू गेट अ सोनोग्राफी डन अगेन, आई नीड टू गेट अ मैमोग्राफी डन अगेन। सो इफ यू आर नॉट हैविंग दैट माइंडसेट, हम्म तो ये थोड़ा सा माइंडसेट का ये होना चाहिए कि यू शुड नॉट, वंस यू आर डन विथ, डोंट थिंक ऑफ रिकरेंस। आप हाँ मैनिफेस्ट मत करो कोई चीज जो नहीं है। आप सोच के मुझे वापस आ रहा है, गूगल पे जाएंगे, वापस आ रहा है क्या, वापस आ रहा है जी क्या। तो ये जी थॉट है आप जो जी यूनिवर्स को दे रहे हो कि रिकरेंस हो रहा है, फिर से आ रहा है। ये निगेटिव हम्म थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से निकालिए। वन डे एट अ टाइम। आज ये हुआ, ये ट्रीटमेंट दिया, आज वो लिया, हुआ, उसका ट्रीटमेंट लिया, तो ये हुआ। फिजिकली क्या है, फिजिकली तो हम ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों को फीमेल्स को फर्क नहीं पड़ता, they are very secure in their own body image. There are some women who choose mastectomy, वो बोलते मुझे mastectomy करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट that your body, you have accepted your body। जिन लोगों ने, जिनको ये है, some people use external implants जो ब्रा में डाली जाती है, तो इट लुक्स गिव्स अ आउटसाइड अ गुड शेप, वैसे भी ठीक है। हम्म कुछ लेडीज को हम काउंटरिंग करते हैं ब्रेस्ट को, मतलब वी हैव रिकंस्ट्रक्टेड द ब्रेस्ट, तो ठीक है। सी जो भी अंदर हुआ है आपके ब्रा के अंदर, सिर्फ आपको मालूम है, किसी और हम्म को नहीं मालूम है। कुछ पेशेंट्स ऐसी है जिनको लगता है कि बाहर के लोग उनको देख रहे हैं एंड दे कैन मेक अप समथिंग हैज हैपेंड, तो ये हम्म दिमाग वाली बात है। व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड योर clothes, only you know, so you should करेक्ट go with that confidence, nobody else knows what has happened in with my body image। वो कुछ भी करेक्ट हो, फिर अच्छा हो बुरा हो whatever। So for accept your body, start loving your राइट body। body is the क्या बोलते हैं उसको, it's a car or a god gifted temple through which you are experiencing the whole life। हम्म So you have to have that reverence for your body कि yes, this is the, because of this body I'm able to experience life, love people, love my children, do my work, earn my money। तो ये प्यार वो बॉडी को देना आप शुरू करिए। That हम्म is what I tell women, start, don't start, there are some imprints in our mind sometimes in, you know, people tell, you know, they have this body image issues पहले से, they don't like, before cancer only they have some issues with the body, some of them। तो ये सब निकालना बहुत जरूरी है, क्लियर इट आउट, जैसे भी है बॉडी आप उसको एक्सेप्ट करो, दिस इज माई बॉडी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन गिवन एंड आई लव व्हाट हैज बीन गिवन टू मी। बिकॉज इरिस्पेक्टिव वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, वो मारुति कार है या वो मर्सिडीज है या कुछ और है, रोलर वट एवर इट दैट रोल्स राइस है, उसका काम एक जगह से उधर दूसरी जगह पहुंचाना है एंड माई बॉडी इज डूइंग दैट फॉर मी एंड आई लव माई बॉडी। तो ये चीज, एक्सेप्टेंस एंड लविंग योर बॉडी, फिजिकली खुद को प्यार देना, ये दो चीजें जी बहुत जरूरी है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट। जी खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर व्यूअर इज breastfeeding can be the cause of breast cancer. नो, नेवर, इट इज इन फैक्ट कैंसर प्रोटेक्टिव, बट देर आर Okay. कैंसर्स, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कैंसर्स है, मतलब हम्म प्रेगनेंसी एसोसिएटेड नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान कैंसर हुआ है किसी को, तो ये प्रेगनेंसी के कारण नहीं हुआ है कैंसर, Okay. दौरान हुआ है। जैसे पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, उनका टाइमलाइन ऐसे हो गया अनफॉर्चुनेटली कि इट इज इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थोड़े से अग्रेसिव होते हैं ये ट्यूमर्स जो प्रेगनेंसी के टाइम आते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव, इन फैक्ट it reduces your risk of it's breast it's cancer। it's ma'am, extensive breastfeeding can be the cause of breast cancer. No, but feeding somebody for 4 5 years thinking कि ये मेरा breast cancer prevent करेगा और फिर breast cancer आएगा, तो that is, I think that is the thing behind it। तो हर चीज moderation is the answer to what we are doing। कि अगर वेट कंट्रोल करो मतलब साइज जीरो में जाके बैठो, दैट इज रॉन्ग अदर थिंग ऑफ, Correct. देन साइज जीरो में कैंसर होगा तो अरे साइज जीरो इज द कॉज ऑफ कैंसर, ऐसे पूछोगे आप सवाल मुझे। जी तो ब्रेस्ट फीडिंग इज
1 year तक ब्रेस्ट फीडिंग इज अ हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग, यू नो. Okay. कुछ विमेन 6 महीना करती है ब्रेस्ट फीडिंग. कुछ विमेन में ये नहीं आप हर चीज को गिल्ट मत लगाओ, निगेटिव मत लगाओ कोई भी चीज को. तो ठीक है, जितना आपसे होता है, 1 साल हुआ ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी गुड. 6 महीने हुआ, फिर भी वेरी गुड. एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ करो, बिकॉज सम आर वर्किंग, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती. आई डोंट वांट टू पुट एनी गिल्ट इन देम. 1 साल तक करना चाहिए, दैट इज प्रोटेक्टिव जी. फॉर इट. उससे ज्यादा करोगे तो उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. जितना तुम ब्रेस्ट फीडिंग करते हो ऐसे नहीं है. Okay. Babies have to eat with their teeth, so there's a limit how Correct. many years you can give breastfeeding, right? Right. मिसेस नीता, आपने किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई थी फिजिकली और इमोशनली कोप अप करने के लिए? Yeah, physically I was like, anyway I was fit, so the operation did not impact me more as such. So I started because I was not able to do yoga and all. I started going for walks. Soon after, I started feeling better. Maybe after the operation, not brisk walk and all, but at least I started moving, going for that ritual of walking, I can say. And I started doing my yoga soon. October mein operation hua. I started going for yoga from February. That was Okay. one part of it. Or positivity in the sense my friends and my son, my relatives, siblings, everybody had seen my brother's worst condition. So compared to that, mine was nothing. So and even I had that gut feeling that I'm going to come out of it because it was just a first stage. And as an option also, again, maybe Dr. Girija may not like, but I was also as an alternative therapy, I have Ayurvedic because I have seen his patients recovering. So I was like relaxed, and that panicky Okay. situation never came to me. And that is why it was anyway fighting. तो करना ही है तो कर लेते हैं. That was my mantra. Okay. I like to So add one more any thing to it. Physiotherapy. After surgery, all women are told to start physiotherapy from day one for their uh, care of the wound and everything, fitness, hand movement and all. तो वो फिजियोथेरेपी के पैम्पलेट्स दिए जाएंगे आपको सर्जरी के बाद, जो आपको करनी होती है. Is it because uh, I got told? You are the ideal example of what happens when a lady comes very early. So, Okay. you're an ideal example why we tell patients come early. You have not required chemotherapy also. Your Kim, surgery has not been very major or very correct. extensive also, Yes. right? Mhm. So, but most women don't come at this stage. So, they require some form of physiotherapy. Okay. गिरिजा मैम, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में रिसेंटली कोई डेवलपमेंट या एडवांसमेंट हुई है जिसके बारे में एक कैंसर पेशेंट को पता होना चाहिए? सर्जिकली तो हम ऑन्कोप्लास्टीज आ गई है, मतलब डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग ऑपरेटिंग. जहां आपका कैंसर है उसके डिपेंडिंग, ब्रेस्ट के कुछ कौन से साइड में है उसके डिपेंड, हम नए नए टेक्निक्स निकाल रहे हैं कि जिससे सर्जरी के बाद ब्रेस्ट नॉर्मल जैसे लगे. सो दैट इज सर्जिकली. बट कीमोथेरेपी में बहुत सारे एडवांसेस आए हुए हैं अभी. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टारगेट थेरेपी दैट हैज कम, मॉलिक्यूलर थेरेपी, जो हम मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल चेंज हो गया है, किस लेवल पे म्यूटेशन हुआ है, गलत ये हुई है, लिंक में ब्रेक हुआ है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, और उस लिंक को टारगेट कर रहे हैं. So there is a lot of target therapies that have come in breast cancer. And surgically, though, we have just improving our techniques to give better and better breast, as normal breast as possible. Mrs. Neeta, what advice you want to give to someone who is recently diagnosed with breast cancer? I will say that first is accept the situation. Acceptance is the first and foremost thing because you are not going to undo the thing what is already happened. Correct. And secondly, fight it because see, unless you keep your strength of your mind strong, you're not going to fight it.
सो जैसे घर में एक छिपकली आती है या कॉकरोच आता है तो उसको पीछे पड़ के हम बाहर निकाल देते हैं। सो जी वैसे पीछे पड़ो उसके कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, आई वांट टू लिव, आई वांट टू एंजॉय द लाइफ, तो इसको मेरे को जी निकालना है। इफ यू कीप जी दैट स्पिरिट, सी देयर विल बी सम, डिपेंडिंग ऑन द स्टेजेस देयर विल बी सम hurdles, everybody's Yes. health will be different, the effects will be करेक्ट different, but that is for certain period। वो मेरे को करना है कि तो करना है, तो भागो उसके पीछे लगो कि यस आई एम गोइंग टू फेस दिस and I am going to overcome that, and I am going to be normal. So जी you have to keep affirming that to yourself, and करेक्ट things fall in line definitely. करेक्ट एक्सेप्टेंस Yes, एंड फाइटिंग इज बहुत जरूरी है yeah, and keep that positive thinking. I am going to overcome पॉजिटिव this. स्पिरिट करेक्ट Hmm. करेक्ट वही अपने को अफर्म करना है कि आई एम ठीक है, 6 महीना, मे बी अ ईयर, आई विल गो थ्रू द हर्डल्स ऑफ हेल्थ, बट आई एम गोइंग टू, ये पीरियड कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। सो आई विल बी ऑल राइट, आई विल बी बेटर, एंड आई विल बी बैक टू नॉर्मल। तो ये खुद को अफर्म करना इज मोस्ट जी इम्पॉर्टेंट है इसे। जी डॉक्टर गिरिजा, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए हाउ कैन इंडिविजुअल्स प्रोएक्टिवली मैनेज देयर ब्रेस्ट हेल्थ? Hmm. See, there are certain things are now difficult because women are getting married late. तो breast cancer risk कम होने के लिए getting married at a right age, having your first child at a right age before you're 30 will reduce your risk of breast cancer. Breastfeeding will reduce your risk factors. Keeping your weight low after those who are post menopause. सी मेनोपॉज जब आ जाता है, पीरियड खत्म हो जाती है, तो इंडियन वीमेन जनरली करेक्ट थिंक कि उनका काम सब खत्म हो गया, अभी दे कैन बिकम राउंड एंड एवरीथिंग। सो दैट इज द टाइम इन फैक्ट व्हेन यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मोर, बिकॉज आपने जो बॉडी को 40 साल घिसा है उसका इफेक्ट अभी आने वाला है। सो नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू मेंटेन, तो वॉक पे जाना स्टार्ट करिए। Then take low fat diet. Don't have lot of fats in your diet. Avoid red meat. मीट में रेड मीट अवॉइड कर सकते हैं आप। हेल्दी फूड, वॉकिंग, तो ये एंड रेगुलर चेकअप is very very important. Screening is very important. See, screen detected cancers do well than symptom detected cancer. There is something called as symptom से आया, मतलब मुझे फील हुआ और फिर मैं आई, और स्क्रीनिंग करने गई और उसमें दिखा, इसमें फर्क है। स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर्स आर अर्ली कैंसर्स। So do your screening, do your monthly breast self examination, ताकि आपको see Neeta is an example sitting here. I mean करेक्ट very few patients you get to see, you know, who are such an early stage who don't need a chemotherapy. ऐसे कितने patient हैं जिनको chemotherapy नहीं लगती? Very handful. It यस speaks about the very very early stage of her. So it's like, you know, if you come at that stage, you're going to be as free as she is. She's an example of राइट that. राइट तो आप जल्दी आओगे तो आपको भी कुछ नहीं लगने वाला है ज्यादा कुछ, करेक्ट isn't it? तो या है बेसिकली हेल्दी रखो, अपने स्ट्रेसेस को मैनेज करो, somehow have some good friend circles for any cancer, not just breast. You don't want to develop any kind of cancer. To keep a good circle, positive, meet positive people, read some good book, friends रखो, अपने मन में कुछ दुकान मठाओ कुछ है तो उसको शेयर करो किसी से, and get ahead of that. Let that not become your poison. So impressions of जी mind form some patterns on body, उसको जी निकालो। जी And this early diagnosis, as the doctor said, finances भी limited लगते हैं, but हाँ, जी as it goes on, no, फिर there is no limit. But ये मेरा तो यस बहुत, I mean, within the limit it got over surprisingly. So I was like, चलो यस नाम के वास्ते तो कैंसर है, but it got over. yeah. And like she said, Ayurveda as a use it as an alternative, not as the Yeah, yeah. primary treatment. It has यस to be an alternative. जी प्राइमरी ट्रीटमेंट एलोपैथी लीजिए, और फिर इसके लिए मेंटेनेंस के लिए मे बी यू कैन Yeah, गो that is फॉर what I did. That is what I did. आयुर्वेदा। Yeah. ओके मिसेस नीता, जब आप इस डिजीज से पूरी तरह कॉन्कर्ड कर चुकी हैं, तो इस टफ टाइम से निकलकर अब आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखती हैं?
जिंदगी के प्रति आपका नजरिया जो है वो किस तरीके से बदला है? Um, the first and foremost, as I told you, the stress is the main reason for my cancer. That is what I feel. So I have हम्म, started to let go. बहुत हम्म, बार ऐसा हम पकड़ के बैठते हैं कि क्यों ऐसा हो गया, why this, why that and all that. हम्म, So I have started letting go. Then I started forgetting and forgiving हम्म, and living in present moment. आगे का सोच के भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना पीछे का. I cannot undo it. So better live it in present moment and be happy and handle it. So that is helping me a lot in managing the stress, I can say. Yeah. Ma'am, our next question is coming from our viewer. Apart from the test, what are the symptoms of cancer? Okay, so if you're doing breast self examination, you will know the changes happening in your breast. So एक तो Hmm, lump है, गठान आ जाती है, आपको correct. फील होती है ब्रेस्ट में कहाँ कहीं तो. अनदर इज निप्पल डिस्चार्ज. निप्पल को जेंटली प्रेस करना है. पेशेंट लोग बहुत प्रेस करते हैं और मेरे पास आते हैं कि ऐसे ऐसे दबा के बेचारा फिर रोके कुछ तो आएगा बाहर वो. तो ऐसे नहीं करना है, जेंटली प्रेस करना है. या तो स्पॉन्टेनियस निप्पल डिस्चार्ज, आप ब्रा निकालते हैं और उसमें थोड़ा सा स्पॉटिंग है, तो निप्पल डिस्चार्ज क्लियर हो सकता है, क्रीमी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है. तो जनरली थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट निप्पल डिस्चार्ज एंड रेड निप्पल डिस्चार्ज इज अ साइन टुवर्ड्स समथिंग विच इज नॉट गुड. या तो चेंज इन द स्किन ऑफ योर ब्रेस्ट. ऑरेंज पेल होता है, उसके तरह ऐसे पॉइंट डॉट 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 होते हैं स्किन पे, तो दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. चेंज इन साइज, कुछ लोगों की ब्रेस्ट इतनी बड़ी होती है कि उसमें उनको वो ये समझ में नहीं आती, लंप नहीं समझ में आती, लेकिन साइज में डिस्पैरिटी देखना शुरू हो जाती है कि राइट ब्रेस्ट थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है लेफ्ट ब्रेस्ट से, या लेफ्ट ब्रेस्ट बड़ी हो रही है राइट ब्रेस्ट से. तो ये भी एक सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का. या निप्पल चेंज होना, निप्पल अंदर जाना, बाहर था वो अंदर चला गया, या थोड़ा डेविएट हो गया, ऐसे सीधा था लेफ्ट तरफ डेविएट हो गया या राइट तरफ डेविएट हो गया. दैट इज द सिम्टम. सी एनीथिंग विच वाज लुकिंग नॉर्मल टू यू फॉर एवरी मंथ, जो आप मिरर के सामने अपने आप को देख रहे हो आपके ब्रेस्ट को, और उसमें कुछ चेंज होता है, दैट इज अ सिग्नल दैट यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड विद अ कंसल्टेंट. कुछ भी बदल हो जाए ब्रेस्ट में. तो जैसा कि डॉक्टर गिरिजा ने बताया, कोई भी एबनॉर्मल चेंज लाइक लंप, साइज में चेंजेस या फिर किसी भी तरह का डिस्चार्ज अगर आप अपने ब्रेस्ट में देखें तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. थैंक यू डॉक्टर गिरिजा for giving us such important information on breast cancer and making us aware about it. Thank you, ma'am. And thank you, Thank you. Mrs. Neeta, for sharing your inspiring story with us. Hope your story helps and motivate others to overcome it. Yes. And many thanks to our viewers for watching our show. See you in the next episode of Empower Her Talk series. Till then, be happy and be healthy. Take care. Mm. Bye. Bye for now. Bye. Thank you.